also. Let's have a look. ओके, बेसिकली यहाँ पे डाउट आ रहा है बेटा, राइट? यस सर। ओके, अब बेटा इसको करने के दो मेथड हैं। एक तो जो सिंपल मेथड है दैट इज़ यूजिंग एल्मनैक, बुक में उसी मेथड से किया हुआ है, बट यू कैन डू इट बाय साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑल्सो। लेट अस से यू गॉट ए वैल्यू ऑफ GHA Aries 356.32.9. Now you go to the almanac, and on this particular day, 12 September, you see this value is falling between which 2 hours? So you have the almanac open? You have it open बेटा? यस सर। ओके, तो मुझे बताओ कि ये 356 कौन से 2 आवर के बीच में आ रहा है? सर 00 एंड 01 आवर। वेरी गुड बेटा। अब जो 00 आवर की वैल्यू है, 00 आवर की जो वैल्यू है उसमें और 356 32.9 में डिफरेंस निकाल देना है आपने। डिफरेंस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 00 वैल्यू, 00 आवर वैल्यू and your value, required value 356 32.9. ओके सर। राइट बेटा, ये डिफरेंस आ गया? सर ओके, अब हमें पता है बेटा एरीज covers a R angle of 15 degrees 2.5 minutes per hour. ओके सर। ओके, सो जो 15 डिग्रीज 2.5 मिनट्स है ये होता है 1 घंटे में या 60 मिनट्स में। जो भी आपका डिफरेंस आया है, इंटरपोलेट फॉर दैट डिफरेंस एंड यू कैन फाइंड आउट द टाइम। ओके सर। समझ गए बेटा? समझ गया। ओके, अब दिस इज नॉट द ओनली मेथड। बुक में एज आई टोल्ड यू इज अ डिफरेंट मेथड गिवन। बुक में आप इंक्रीमेंट टेबल से इसे निकालते हो। दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट लगे वो करो, दूसरे वाले को भूल जाओ। ओके सर। ओके, ऑल राइट सर। इसी के रिगार्डिंग अगर इंक्रीमेंट टेबल से अगर लेते हैं तो इन केस ऑफ प्लैनेट से वी करेक्शन फिर कहाँ से, या वी करेक्शन कहाँ से ले रहे हैं वो? ओके ओके बेटा, अब बेटा अगर आप इंक्रीमेंट टेबल से प्लेनेट के लिए एंट्री करते हो तो जो डिफरेंस आएगा ना, डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस आवर एंड योर वैल्यू, उसमें वी करेक्शन भी होगी। प्लेनेट में और मून में दोनों में वी करेक्शन होती है। अब वो वी करेक्शन को बाहर कैसे निकालें? क्योंकि हमें मिनट्स तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं बेटा, आपका जो डिफरेंस है ना, जो आपका डिफरेंस है, हम उसके लिए बिना वी करेक्शन को निकाले पहले मिनट और सेकंड का पता करते हैं। ओके, जो डिफरेंस आपका आया है 00 आवर वैल्यू में और आपकी वैल्यू में जो डिफरेंस आया है उसका आप मिनट पता करोगे। इंक्रीमेंट टेबल में जाओगे तो किसी मिनट के अंडर फॉल हो रहा होगा, सो फ्रॉम देयर यू पिक अप द मिनट। ओके, अब मिनट में चेंज नहीं होगा बेटा, सेकंड में ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा, द मिनट वोंट चेंज। सो उस मिनट के लिए आपने जो उसकी वी करेक्शन दे रखी है उसका इंक्रीमेंट पिक कर लेना है, एंड देन यू subtract that increment of V correction from the difference to get the correct minute and seconds, accurate minute and seconds. ओके सर। ओके ओके, समझ गया बेटा? हाँ जी। ओके सर एक और चीज पूछना था। Once again please. बोलो बेटा, वन बाय वन। Sir once again please. ओके, जो अभी बताया वो दोबारा बताऊं? Yes sir. Yes sir. ओके, ध्यान से सुनना बेटा। हमारे पास एक पर्टिकुलर GHA की वैल्यू आई, हमने प्रीवियस आवर की GHA की वैल्यू एल्मनैक से देखी, दोनों में डिफरेंस निकाल लिया।
इन केस ऑफ प्लैनेट एंड मून ये जो डिफरेंस है इसमें सिर्फ मिनट और सेकंड का इंक्रीमेंट ही नहीं है, इसमें वी करेक्शन भी इंक्लूडेड है। अब वो वी करेक्शन को बाहर निकालने के लिए हमें मिनट पता होने चाहिए, क्योंकि उसी मिनट पे जाके तो वी करेक्शन का इंक्रीमेंट हमें पता चलेगा। जो डेली पेज पे दे रखी है वो तो आवरली वी करेक्शन है। सो हाउ वी फाइंड द मिनट्स? जो ये डिफरेंस आपके पास आया है, just 1 minute beta, just give me a minute. There's some issue, just a minute. Okay beta, sorry for the interruption. So बेटा what I was saying is कि आप सबसे पहले तो डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस बिटवीन द रिक्वायर्ड GHA वैल्यू एंड द प्रीवियस आर GHA वैल्यू। अब हमें वी करेक्शन इसके लिए चाहिए, हमें तो मिनट और सेकंड पता नहीं है। तो ये जो डिफरेंस आपने निकाला है, आप इसी डिफरेंस के साथ मिनट को आइडेंटिफाई करो पहले। सो वट एवर मिनट इट इज़ फॉलिंग अंडर, आप उसी मिनट में वी करेक्शन का इंक्रीमेंट ले लो, reduce that increment from the difference and then look for seconds under that minute. You will get the accurate time. Understood. Thank you. Clear beta? Okay. Okay. Sir, All right. number 5 question खोलेंगे sir, number 5. Number 5. Okay beta. Let's go to. वो 180 लेंगे। हाँ बेटा बोलो। सर एक जीसी में एक छोटा सा डाउट था सर, वो आप जो सॉल्यूशन भेजे थे ना सर, पहले नंबर 5 देख लें बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, नंबर 5। हाँ ये आ गए बेटा नंबर 5 पे, बताओ। सर इसमें जो हम कोर्स बना रहे हैं सर, जो सा ये रेसिप्रोकल कोर्स 025 और जो सा अपना 205 है सर, ये वाले, हाँ जी सर। विद Yeah. रेफरेंस हम नॉर्थ अपना ऊपर ही रखेंगे, जैसे डी लेंगे, डी को हम नॉर्थ ऊपर रख के ही कोर्स मारेंगे ना सर, ये वाला। हाँ certainly बेटा, you will always have north on top. यस सर। तो आंसर थोड़ा सा लाइक 1 माइल का कुछ डिफरेंस आ रहा है सर, 2-3 बार ही किया था। ओके, आंसर में डिफरेंस आ रहा है। इज द प्लॉट मोर और लेस ओके लाइक दैट? ये सर ऐसा ही था, प्लॉट सिमिलर था। प्लॉट इज ओके। तो क्या डिफरेंस आ रहा है बेटा? डिपार्चर वाज कमिंग 11.2 सर, ईस्ट। 11.2 आ रहा है डिपार्चर। व्हाट इज द डी लॉन्ग व्हिच यू आर गेटिंग? डी लॉन्ग ज्यादा बता, एक मिनट सर, खोल। लैटिट्यूड इज ओके। सम 12.9 सर, 12.9 मिनट्स ईस्ट। 12.9 आ रहा है। एनीबॉडी एल्स सॉल्व दिस बेटा? ओके ऑल राइट, सर सॉल्व किया लेकिन तो समझ में नहीं आ रहा सर, ये क्वेश्चन आप थोड़ा समझा देंगे सर फ्रॉम द बिगिनिंग? ओके नंबर 5 बेटा। हाँ जी सर, करेक्ट सर। ओके ऑल राइट, ठीक है बेटा, समझा देता हूँ। अंकित 12.9 इज फाइन बेटा। 12.9 is fine beta. 12.9 is okay. So if your Okay, plot is in this particular way, the fundamentals are correct. Little bit difference in the answer. All right. यस सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। Okay. तो अब इसको बेटा
वन बाय वन लेट्स टेक वन बाय वन। अभी बच्चे 5 में अटके हुए हैं, पहले 5 देख लेते हैं, फिर 4 पे चलते हैं, फिर किसी का जीसी में भी डाउट था वो बाद में देखते हैं। ओके ओके। अब बेटा नंबर 5 में आपको क्या डाउट आ रहा है? आपने सोल्यूशन देखा नंबर 5 का? हाँ जी सर। मुझे बताओ कि इसमें आपको क्या डाउट आ रहा है बेटा? सर इसमें ये क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टेड बट कैलकुलेटेड यूजिंग 1800 ईयर पोजीशन और 1754 पे और 1812 का, तो ये बेसिकली कोर्स को रिवर्स लगाना है, क्या करना है थोड़ा सा बताएं सर। 6 मिनट बिफोर 12 मिनट आफ्टर। देखो बेटा, एक साइड ली गई है 1754 पे, दूसरी साइड ली गई है 1812 पे। दोनों को सॉल्व करने के लिए डीआर पोजीशन यूज़ की गई है एक ही 1800 की, यही वाली पोजीशन। नंबर 1 ऐसा किया जा सकता है, आप कोई भी डीआर पोजीशन यूज़ कर सकते हो टू प्लॉट द साइट, आपकी पीएल गलत नहीं होगी। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब दूसरी चीज़ ध्यान से सुनो। इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपने किस टाइम की डीआर को यूज़ किया है, 1800 की डीआर को यूज़ किया है, 1830 को यूज़ किया है, 1730 को यूज़ किया है, जो पीएल आपको मिलेगी वो उसी टाइम की होगी जब साइट ली जाती है। 1754 पे अगर साइट ली गई है तो पीएल 1754 की ही होगी। 1812 पे अगर साइट ली गई है तो पीएल 1812 की ही होगी। पीएल हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द डीआर टाइम। समझ गए बेटा? यस सर। ओके, तो अब हमारे पास एक 1754 की पीएल आई, हमने इसे यहाँ प्लॉट किया। मुझे फिक्स चाहिए 1800 की, तो मैंने 6 मिनट के लिए उसे आगे रन अप्लाई कर दिया 205 1.2 वाला, और मेरी ये पीएल ट्रांसफ़र हो गई 1800 पे। दिस इज 1800 पीएल। ओके, जो दूसरी पीएल थी मेरी वो 1812 की पीएल थी। मैंने 1812 की पीएल पे 12 मिनट का रिवर्स रन अप्लाई किया बेटा, रिवर्स, क्योंकि मुझे 12 मिनट पीछे जाना है, 1800 पे जाना है। तो 12 मिनट का रिवर्स रन लगाया तो मेरे पास ये वाली पीएल आ गई। दिस इज ऑल्सो 1800। जहाँ पे इंटरसेक्ट की वो मेरी 1800 की फिक्स है। समझ गए बेटा? यस सर। वेरी गुड, ग्रेट। सो ये था नंबर 5। अब नंबर 4 में डाउट था। आई एम गोइंग टू नंबर 4 बेटा। बताओ बेटा नंबर 4 में क्या डाउट आ रहा है? ओके, राइट। Just a minute, let's open up the question also. इसमें सर इस प्लॉट में ये जो सा लैटिट्यूड लिखा है ये भी गलत है सर। 48 46 नहीं है वो। Okay, okay, all right. The latitude is 49, 46.3, right? यस सर यस। और एमलेट सर, एमलेट Yeah. इसका 48 नहीं आता सर, कैसे भी 48 नहीं आएगा सर। Okay, all right. Don't worry about these figures. There may be some error here. You just worry about the final plot. Let me see the question better once. Vessel in DR so and so took a star site, obtain an intercept of 9.5 miles towards bearing 056. Perfect. ये PL आ गई हमारे पास। After this site, the vessel steered 14435 miles, obtained another intercept of 8.2 towards and azimuth 324. Azimuth 324, 8.2 towards, ये second PL आ गई।
Find the vessel position at second observation if the DR used for calculating the second observation was obtained by applying the run on the ITP position. ओके अब देखो बेटा, एक तो आई थिंक यहाँ पे जो है ना फिक्स इज दिस वन. यस सर क्योंकि वो तो Right. एजिमुथ की लाइन पे उन्होंने फिक्स बना दिया है. दैट इज नॉट द फिक्स, द सेकंड वन इज एग्जैक्टली ट्रांसफर्ड जो है. एग्जैक्टली. अब पीयूष बेटा आप ये चीज़ ध्यान से देखो, जो सेकेंड पीएल हमने प्लॉट की है वो आईटीपी पे रन लगा के प्लॉट की है, करेक्ट है? अगर हमने ये आईटीपी पे रन लगा दिया, देखो मैंने डीआर से इंटरसेप्ट, होल्ड ऑन, रुक जा बेटा, लेट मी एक्सप्लेन, फिर तुम्हारे डाउट पूछूंगा. सेकेंड पीएल को प्लॉट किया गया है आईटीपी पे रन लगाने के बाद. हमने ये इंटरसेप्ट की लेग भी और जो डिस्टेंस टीम्ड है दोनों लेग्स को अपनी डीआर पोजीशन पे अप्लाई किया. मेरे पास ट्रांसफर्ड आईटीपी आ गया बेटा. ट्रांसफर्ड आईटीपी पे मैंने जो सेकेंड इंटरसेप्ट था 324 का एजीमुथ था और 8.2 माइल टूवर्ड्स था, उसके साथ ये पीएल को प्लॉट कर दिया. ये पीएल प्लॉट हो गई बेटा. वेरी गुड, सेकेंड पीएल आ गई. अब बेटा जो पहली पीएल थी वो तो जब हमने साइट ली थी तब भी आईटीपी में से पास हो रही थी ना, पीएल हमेशा आईटीपी से पास होती है, और ये मेरा ट्रांसफर्ड आईटीपी है. तो अब जो ट्रांसफर्ड पीएल है वो तो इसी में से पास होगी ना बेटा. दैट इज व्हाई यू सी ये ट्रांसफर्ड पीएल हम यहीं से पास कर रहे हैं. किसका डीलैट बेटा? डीलैट लेके दूसरी पोजीशन कौन सी प्लॉट कर रहे हो? नहीं, सेकंड पोजीशन मैं समझा नहीं बेटा. आपने जो ये हाँ जी, राइट बेटा. ओके समझ गया मैं. सो व्हाट यू आर डूइंग इज, आपने जो आईटीपी है सेकेंड पीएल का उसका लेट लॉन्ग निकाल लिया. ओके उसका लेट लॉन्ग आपने यहाँ प्लॉट किया, तो बेसिकली यू हैव प्लॉटेड दिस पोजीशन. ओके ये पोजीशन, लेट अस जूम इन तो थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी. समझ गया मैं तुमने क्या किया है. ओके सो व्हाट यू हैव डन इज, अच्छा इसमें एक चीज तो जो करेक्शन है दैट इज कि फिक्स ये वाली है बेटा. ओके सो व्हाट यू हैव डन इज, तुमने ये वाली जो पोजीशन है ना बेसिकली सेकेंड पीएल का आईटीपी, इसका लेट लॉन्ग यहाँ पे प्लॉट किया है. ओके इफ यू वांट यू कैन डू दैट. ओके उसके लिए तुम्हें ये डीलैट निकालना पड़ेगा. ओके क्योंकि इंटरसेप्ट और एजीमुथ आपको पता है. वेरी गुड. और फिर आपको यहाँ पे ये डिपार्चर भी निकालना पड़ेगा, डी लॉन्ग और डिपार्चर निकलेगा, उससे आप इसे प्लॉट करोगे, करेक्ट? तो बेटा आप कर तो सकते हो, आपका आंसर भी सेम आना चाहिए विद ए स्लाइट डिफरेंस, बट तो फिर दोबारा चेक करके देखना बेटा, चेक द वर्किंग अगेन. आपका आंसर जो है वो शुड बी क्लोज, इट शुड नॉट बी फार अवे. लेकिन वो मेथड लंबा मेथड है बेटा, आप क्यों कर रहे हो उसे? क्योंकि आप कम से कम 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाओगे उसमें बेटा, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे उसमें. सो कर सकते हो, देयर इज नो इशू अबाउट इट, बट यू विल बी स्पेंडिंग 5 मिनट्स एक्स्ट्रा. सो एनीवे अगर आप उससे भी ट्राई करना चाहते हो आप करके देखना दोबारा, यू विल गेट ए पोजीशन सिमिलर टू दिस, क्लोजर टू दिस. ओके सर यहीं से 6 पे जाएंगे सर. 3 पर Okay. सर 3 पर we have to do calculation also in second part question.
ओके चलते हैं बेटा, पहले कोई बात नहीं, 3 की जल्दी, पहले 3 पे चले जाते हैं फिर 6 पे चले जाएंगे, होल्ड ऑन। ये आ गए नंबर 3 पे, डियर सो एंड सो इंटरसेप्ट 3 में क्या डाउट आ रहा है बेटा? सेकंड पार्ट, राइट बेटा। We have to do calculation also. नो नॉट रिक्वायर्ड बेटा, ये जस्ट यहाँ पे आपको शो करने के लिए दिखाई गई है दैट द आंसर्स आर मैचिंग। ओके, द कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ लिख दिया है Yes, sir. विदाउट वर्किंग आउट द साइट, सो यू डोंट नीड टू शो द कैलकुलेशन। ये सिर्फ यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए है कि सेम आ रहा है। Okay, sir. चलिए समझा भी दोगे थोड़ा सा सर, विदाउट कैलकुलेशन वाला सर। ओके बेटा, बड़ा सिंपल चीज़ है कि आप अगर एक टाइम पे एक साइट लेते हो, कोई भी मेथड यूज़ करो, आप चाहे लॉन्ग बाय क्रोन यूज़ करो चाहे इंटरसेप्ट यूज़ करो, आपको पीएल सेम मिलने वाली है, राइट? तो हमने इसको पहले तो इंटरसेप्ट के साथ कैलकुलेट किया। जब हमने इसे इंटरसेप्ट के साथ कैलकुलेट किया, हमारे पास इंटरसेप्ट आ गया। बेसिकली इंटरसेप्ट का मतलब है, मैं जूम इन कर रहा हूँ, इंटरसेप्ट का ये मतलब है कि आप डीआर पोजीशन को प्लॉट करें, डीआर पोजीशन पे आप एजीमुथ को ड्रॉ करें। ये हमने एजीमुथ को ड्रॉ कर दिया। फिर इस एजीमुथ में जो भी हमारा इंटरसेप्ट आया है, 2.7 इंटरसेप्ट आया था हमारा, उसे हम ड्रॉ कर दें, आईटीपी आ जाएगा। आईटीपी पे एजीमुथ के परपेंडिकुलर पीएल ड्रॉ कर दें, ये हमारे पास पीएल आ गई इंटरसेप्ट की। अब अगर इसी को हम लॉन्ग बाय क्रोन मेथड से सॉल्व करते बेटा, लॉन्ग बाय क्रोन मेथड ऐसा है विच बेसिकली टेल्स अस व्हाट इज द पॉइंट वेयर द पीएल कट्स द डीआर लैटिट्यूड। वही तो ऑब्जर्व लॉन्ग आता है हमारा। ऑब्जर्व लॉन्ग क्या होता है? ऑब्जर्व लॉन्ग इज दैट लॉन्जिट्यूड वेयर द पीएल कट्स द डीआर लैटिट्यूड। तो हमने इसी पीएल पे लैटिट्यूड को ये कहाँ पे कट कर रही है, वो पॉइंट अपनी प्लॉटिंग से ही नोट कर लिया। ओके, प्लॉटिंग से नोट करके आप अब इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप ये वाला डिपार्चर यहाँ से मैयर कर लो, इसे डी लॉन्ग में कन्वर्ट कर दो, उससे आपको ऑब्जर्व लॉन्ग मिल जाएगा। एक मेथड तो ये है। ओके, और दूसरा मेथड है कि अगर यहाँ पर भी आप राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहते हो, बिकॉज यू सी दिस इज ब्रेवो अल्फा डेल्टा, ये जो ट्रायंगल बनी छोटी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल अल्फा राइट एंगल है, और इसमें आपको जो इसका अल्फा डेल्टा साइड है, अल्फा डेल्टा वो तो पता है, वो 2.7 माइल्स है। तो आप ब्रेवो डेल्टा को बाय यूजिंग द रेशियो ऑफ कॉस थीटा निकाल सकते हो। उसने यहाँ पे कॉस थीटा से इसको निकाल दिया। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली डेल्टा ब्रेवो आ गया विच इज़ द डिपार्चर। डिपार्चर को हमने डी लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया। ये भी यूज़ किया जा सकता है, विच एवर इज कन्वीनियंट। ओके सर, ओके समझ आ गया सर। वेरी गुड बेटा, नंबर 3 था ये। इसके बाद कौन सा बोल? नंबर 6 सर, इसी क्वेश्चन में ये हाँ, एक जो आपने भाई कैलकुलेशन किया है, उसमें 2 पी है, जो पी का मेरा थोड़ा डाउट हो गया। पी आपने अलग डाला, उसमें जो कैलकुलेटेड पी था वो अलग था, इसमें पी कैलकुलेट किया 2 पी है। ओके, जो यहाँ पे कैलकुलेट तो किया बेटा, पहले कैलकुलेशन में पी निकाला ना, राइट पहले हमने कैलकुलेशन किया था ना सर, उसमें पी निकाला, और अब आपने ये फिर कैलकुलेशन करके पी निकाला, फिर लॉन्गिट्यूड निकाला। राइट। बेटा लॉन्ग बाय क्रोन में तो हमेशा 2 पी होते हैं ना, एक अप्रॉक्स एलएचए आता है और फिर दूसरा एग्जैक्ट पी निकलता है जिसे एक्यूरेट एलएचए आता है। ओके Okay, सर, that is मतलब why there जो are- प्रीवियस वन था वो अप्रॉक्स। यस, द प्रीवियस वन वाज अप्रॉक्स बेटा, ये वाला जो था ये अप्रॉक्स था, क्योंकि इसको तो हमने डीआर लॉन्जिट्यूड से ये निकाला है ना बेटा। करेक्ट, ओके सर, थैंक यू सर। दिस वाज अप्रॉक्स, राइट बेटा, राइट। ये एक्यूरेट है बेटा जो यहाँ पे निकाला है। ओके ग्रेट, अब नंबर ये 6 जो पोजीशन बी है, इसको हमने ये जो पीएल है उसी को एक्सटेंड किया, वही है जहाँ पे डीआर पे जो काटेगी वही है सर? बिल्कुल बेटा, वही पोजीशन है ये। इंटरसेप्ट की पीएल जहाँ पे भी डीआर लैट को कट करेगी दैट इज पॉइंट ब्रेवो। ओके सर।
ओके ओके बेटा, नंबर 6 देखते हैं अब। दिस इज नंबर 6। इसमें तो पहले से लॉन्गिट्यूड नहीं दिया हुआ, तो अप्रोक्स पी नहीं निकल पाया। एक मिनट, लेट मी सी। 22 September AM, DR so and so, sextant altitude of sun's lower limb was this. ओके अब देखो बेटा, इसमें AM दे रखा है, क्वेश्चन में AM इज गिवन। यस सर, यस यस सर। और ये सन की ऑब्जर्वेशन है। हाँ जी सर, तो एम वो AM आ का जाएगा। मतलब बताओ, सन तुम्हारे ईस्ट में होगा या वेस्ट में? ईस्ट में होगा। AM में सन हैज टू बी ईस्ट, यस है ना? AM PM का मतलब ही यही होता है, एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। ओके, सो सन इज ईस्ट ऑफ यू इन द AM एंड वेस्ट ऑफ यू इन द PM। मरपास के बाद वो PM टाइम काउंट होता है। तो अगर सन आपके ईस्ट में है तो बताओ इसका LHA 180 से कम होगा या ज्यादा होगा बेटा? कम होगा सर। अगर मोर होगा, ज्यादा होगा, मोर देन 180। LHA वेस्टर्ली मेजरमेंट है, सो ये बॉडी इज ईस्ट ऑफ यू, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 180, राइट बेटा? यस सर, यस यस यस। तो हमारे पास जो P की वैल्यू आई, हमने इसे 360 में से सब्ट्रैक्ट किया एंड दिस इज द LHA वैल्यू बेटा। ओके ठीक है बेटा, ये पहला डाउट तो क्लियर हो गया। इतना सब झोल झाल करने की जरूरत नहीं है GMT उमटी वाला सर? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। आपके पास ये आ तो गया बेटा, यू गॉट द LHA ना, 315, यू गॉट द LHA, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, एंड सर ये ऑब्जर्व लॉन्ग वेस्ट कैसे आया सर? वेस्ट ये हम कैसे, ईस्ट है या वेस्ट है? ओके अब ये आपका LHA आ गया 315 36.8, GHA क्या था 115 20.5। हाँ जी ओके, सर। मैं मैं यहाँ पे खाली 115 लिख रहा हूँ, 115। लॉन्जिट्यूड कैसे निकालते हैं? पहले तो दोनों में डिफरेंस निकालो। इनमें डिफरेंस आ गया अप्रोक्सीमेटली 200, यस सर, है ना? अप्रोक्सीमेटली 200 इज द डिफरेंस। एंड GHA जो है यहाँ पे लीस्ट है, GHA 115 है, तो लॉन्जिट्यूड ईस्ट होना चाहिए, तो मैंने 200 के आगे में ईस्ट लिख दिया, करेक्ट? यस सर। जब भी ये वैल्यू 180 से बड़ी आए तो क्या करते हैं, 360 में से माइनस करते हैं, एंड नेम चेंज कर देते हैं। So 360 minus 200 gives us 160 and the name is changed to West beta. That is how you got this. ठीक है सर, करेक्ट सर, थैंक यू। ओके, बेसिक्स का ध्यान रखो, बेसिक्स का ध्यान रखो, जो मैंने बताए हुए हैं ना पॉइंट, वो सारे याद रखो, प्रैक्टिस करो। सर इसमें जो आपने बेसिक बताया ना सर, सब्ट्रैक्ट स्मॉलर वन फ्रॉम द बिगर वन एंड GH इज बेस्ट, पुट द बेस्ट, इफ GH इज लीस्ट पुट ईस्ट है, if it's more than 180 then subtract from the 360 and change the name. Yes, that's right. सर और इसमें एक क्वेश्चन, ये GMT वाला जो मैटर है कहीं कहीं कंफ्यूज कर देता है कि इसमें GMT 22 और फिर हमको क्रॉस चेक करना पड़ेगा ना सर कि ये इसमें लिखा GMT 22 पूरा स्टैगर्ड ही कंफ्यूज कर रहा है बेटा। जहाँ कहीं भी डेट के आगे कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो LMT की डेट है, जहां मेंशन्ड है वहां डाउट ही नहीं है। मैंने आपको बताया हुआ है, द डेट इन द क्वेश्चन इज ऑलवेज द LMT डेट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। जितनी चीजें मैंने ना आपको पॉइंट्स छोटे छोटे बताए थे, वो सारे अब इनमें यूज होंगे, सारी चाबियां लगेंगी। सो ओके बेटा, अब ओके हो गया ये? सर एक डाउट था सर। एक बेटा पहले, तुम्हारे डाउट से पहले एक GC में डाउट आ रहा था बेटा। क्या डाउट है बेटा, वो बताओ मुझे। सर GC के लिए पूछ रहा हूँ सर। बोलो सौरभ, बताओ बेटा। एक क्वेश्चन आप GC का दिए थे सर, क्वेश्चन नंबर 2 जो था ना सर, उसमें सर डिस्टेंस इज इक्वल टू d long into cos of lat v ऐसा लिया हुआ है सर, मतलब वो कैसे आया सर, वो समझ नहीं आ रहा।
तो मुझे ये बताओ कि वो जो क्वेश्चन है तुमने सॉल्व किया? ये सर सॉल्व किया हूँ। उसकी डायग्राम तुम्हारे सामने है, खोल लो अभी उसको। जी सर खुला हूँ। ओके, अब उसमें ये जो बात हो रही है विक्टर ब्रेवो डिस्टेंस की बात हो रही है बेटा, राइट? ये सर मुझे बताओ ये विक्टर ब्रेवो डिस्टेंस, इज इट ए ग्रेट सर्कल और ए स्मॉल सर्कल? नहीं, प्लेन सेलिंग है। नो 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 नो, ये विक्टर ब्रेवो जो लाइन तुमने ड्रॉ कर रखी है, इज इट ए स्मॉल सर्कल और ए ग्रेट सर्कल? स्मॉल सर्कल सर। स्मॉल सर्कल है ना, और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है ना, लिमिटिंग लैट है ना? हाँ, लिमिटिंग लैट है सर। जब आप पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पे ट्रेवल करते हो तो डिस्टेंस कौन से फॉर्मूले से आता है बेटा? पैरेलल सेलिंग में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा? पैरेलल सेलिंग में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? कॉस से ना सर। नो, कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं बेटा? डीलैट इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू कॉस को। ना 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 ना, पैरेलल सेलिंग में तो डीलैट होता ही नहीं, डीलैट तो जीरो है क्योंकि एक ही लैटिट्यूड पे हो आप। तुमने पैरेलल सेलिंग का कॉन्सेप्ट मिस कर दिया बेटा। पैरेलल सेलिंग में इसीलिए डाउट आ रहा है तुम्हें, दैट इज द डाउट। पैरेलल सेलिंग का कॉन्सेप्ट मिस हो गया है। पैरेलल सेलिंग का एक सीधा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है। पैरेलल सेलिंग में जो डिस्टेंस होता है वो होता है डिपार्चर, विच इज इक्वल टू डी लॉन्ग इंटू कॉस ऑफ एम लैट। दैट इज व्हाट इज यूज्ड हियर बेटा। पैरेलल सेलिंग एक बार रिवाइज करो बेटा सौरभ। ओके सर, ओके ओके सर। एक बार और बोलेंगे सर, क्या था सर फॉर्मूला? डिस्टेंस इज इक्वल टू पैरेलल सेलिंग में डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड एज डिपार्चर, both distance as well as departure equal to d long into cos of m lat, और cos of latitude भी लिख सकते हो। ओके सर, ओके तुमने वो पैरेलल सेलिंग वाला मिस किया बेटा, यू मिस्ड द इनिशियल क्लासेस और व्हाट? ये सर इनिशियल क्लास मिस था सर। ओके, दैट इज द इशू। ओके सर, कोई बात नहीं बेटा, एक डाउट था। प्रैक्टिस बुक से पैरेलल सेलिंग के एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यू विल गेट टू नो। यस सर, सर आपने एक पीडीएफ भेजा था जिसमें लिखा था मेथड फॉर कैलकुलेटिंग सेलेस्टियल पीएल इफ नॉट स्पेसिफाइड। सर उसमें सेकंड पॉइंट के अंदर आपने लिखा है कीप इन माइंड दैट इफ पोलारिस अजीमुथ इज एग्जैक्टली नॉर्थ देन द पोलारिस साइड विल गिव यू फिक्स्ड लैटिट्यूड। बट सर एनीवे अगर पोलारिस है तो फिक्स्ड लैटिट्यूड तो मिलता ही है ना हमें, तो उसमें... ना बेटा, ना 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 ना, पोलारिस का एजीमुथ अगर 359.9 है तो जो पीएल है वो तो एजीमुथ के परपेंडिकुलर होगी ना। इट विल बी क्लोज टू द लैटिट्यूड बट इट विल नॉट बी एट योर, उस केस में ऑब्जर्व लैट जो है वो फिक्स लैट नहीं होगा बेटा, क्योंकि आपकी पोजीशन तो पीएल पे कहीं भी हो सकती है। हाँ ओके सर, अंडरस्टूड। ओके, फिक्स लैट तभी बनेगा अगर एजीमुथ एग्जैक्टली 0.0 है, वो सिर्फ दो कॉलम में आता है, 30 to 39 and 210 to 219. ओके गॉट इट। ओके सर, बट क्योंकि सर जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपने जो दिया हुआ है उसके अंदर जो लैट निकला है हमारा वो 2817.6 जो है वो लैटिट्यूड तो निकालेंगे ना हमने पोलारिस साइड से। फर्स्ट क्वेश्चन वो ऑब्जर्व लैट होगा बेटा, वो ऑब्जर्व लैट है बेटा, दैट इज नॉट द फिक्स लैट। यस ओके ओके, इट इज द ऑब्जर्व लैट। अगर उसकी डायग्राम बनी है, आई डोंट नो वेदर उसकी डायग्राम बनी है आंसर शीट में या नहीं। ओके, डायग्राम नहीं बनाई गई है। और अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन की वर्किंग में पीएल की डायरेक्शन क्या लिखी है उन्होंने, 90.4 to 70.4 लिखी है। यस सर। ओके, तो पीएल तो बेटा फिर ईस्ट वेस्ट नहीं हुई ना, तो हाउ कैन दिस लैटिट्यूड बी अवर फिक्स लैट? तो फिर सर वैसे तो उन्होंने अगर बोला है क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि फाइंड द लैटिट्यूड, तो सर फिर इन दिस केस वी आर फाइंडिंग ऑप्स लैट नॉट द दिस वन क्या बोलते एक्चुअल फिक्स लैट ना। नहीं बेटा, दे विल नेवर आस्क यू फाइंड द लैटिट्यूड, दे विल आस्क यू फाइंड द पीएल। एक बार क्वेश्चन दोबारा चेक करो। एक सेकंड सर, जस्ट हैव ए लुक, दे विल ऑलवेज राइट फाइंड द पीएल। yes, और अगर लैटिट्यूड लिखना है तो वो लिखेंगे फाइंड द ऑब्जर्व लैटिट्यूड। ओके
ओके अगर हाँ, अब ये भी बात है बेटा, अब कोई एग्जामिनर अगर गलत सवाल बना दे और आपको सवाल ऐसा भी आ जाए, उसने फाइंड द लैटिट्यूड भी अगर लिख दिया, तो आप उसके आंसर में ऑब्जर्व लैट ही लिखोगे। ओके सर, बिकॉज सर आपने जो वो क्वेश्चन दिया उसके अंदर आपने लैट भी स्पेसिफाई किया हुआ है, मतलब आंसर के अंदर आपने लैट दिया हुआ है, तो आई वाज वंडरिंग कि मतलब वहां भी ऑब्जर्व लैट ही लिखा होगा बेटा, फिक्स लैट नहीं लिखा होगा। एक सेकंड सर, वहां पे सर कुछ लिखा ही नहीं, मतलब वो आपने सिर्फ लैटिट्यूड दे दिया है वहां पे आंसर में, बस लैटिट्यूड ऑब्स लैट या फिक्स लैट कुछ भी नहीं लिखा है। क्वेश्चन 1 में बेटा, 1 में हाँ जी सर, शुड बी ऑब्जर्व लैट बेटा। हाँ जी, क्योंकि सर उसमें क्वेश्चन में तो पीएल ही पूछा है, तो आपने मतलब वहां पे लैट लिखा था, तो फिर आई वाज वंडरिंग, फिर मैं वो चीज पढ़ रहा था आपका, तो लैट तो हमें मिल ही रहा है, तो आई गॉट कंफ्यूज्ड कि मतलब आपने अलग से क्यों स्पेसिफाई किया है वो चीज। सो नाउ इट इज क्लियर बेटा। यस सर, नाउ इट्स अंडरस्टूड। और ओके एक चीज थी सर, वो कल आपने जो डाला था वो इंस्ट्रक्शंस फॉर ये लॉन्जिट्यूड करेक्शन फॉर्मूला एंड ऑल दैट, वो सर मुझे समझा नहीं वो किस चीज के लिए था। बेटा वो किसी को डाउट आया था, उसको डाउट सॉल्व करने के लिए मैंने डाल दिया था, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। किसी सवाल में अगर मून का मरपास टाइम निकालना हो ना, तो उसमें ये लॉन्जिट्यूड करेक्शन लगती है। अच्छा, हमारे ओके पेपर में रेयरली आती है, इट डज नॉट कम वेरी ऑफन इन फेज 1, तो उसके डाउट सॉल्विंग के लिए डाला था। ओके सर, ओके ओके ग्रेट। सो आर वी सॉर्टेड आउट विद द डाउट्स? सर वो फिर से बता दीजिए, एएम पीएम का एलएचए रहेगा, P इज इक्वल टू एलएचए कब होगा, एलएचए 360 माइनस P कब होगा? यस सर। बेटा तुम्हें जो सन वाला सवाल अभी देखा था उसमें डाउट आ रहा है? यस सर। ओके, ध्यान रखो हमेशा, अगर कभी भी सन साइट आपको दी गई है, सन साइट, और उसमें आपको उन्होंने एएम या पीएम बता दिया है, एएम या पीएम, एएम का मतलब ये होता है कि सन इज ईस्ट ऑफ यू, पीएम का मतलब होता है सन इज वेस्ट ऑफ यू। So AM PM in case of a sun site tell you whether it is east or whether it is west. अब अगर तो सन आपके वेस्ट में आ जाए तो उसका LHA हमेशा 180 से कम होगा, बिकॉज LHA इज ए वेस्टर्ली मेजरमेंट। अगर LHA 180 डिग्रीज से कम है तो आप जो बॉडी है वो आपके वेस्ट साइड में ही होगी। अगर LHA 180 से बड़ा हो जाए तो बॉडी आपके ईस्ट में आ जाएगी। ओके मैं आज भी डिटेल में बताऊंगा, PZX ट्रायंगल जब करेंगे ना तो ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए इतना याद रखो, व्हेनेवर सन इज ईस्ट ऑफ यू LHA लेस देन 180, सॉरी व्हेनेवर सन इज वेस्ट ऑफ यू LHA लेस देन 180, व्हेनेवर सन इज ईस्ट ऑफ यू LHA मोर देन 180। सॉल्व द क्वेश्चंस विद दिस। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ओके ग्रेट। अभी तुम लोगों की असाइनमेंट पूरी नहीं हुई है, कुछ सवाल तुमने कर लिए हैं, सो बाकी के यू कैन कंटिन्यू डूइंग। 6-7 ही होंगे सर, बाकी कल मुझे आएंगे डाउट। तुम्हारे डाउट से ही पता चल गया मुझे बेटा, सारी स्टोरी समझ में आ गई मुझे कि कहाँ तक पहुँचे हो, सो दैट्स ओके, नो इश्यूज। आज बेटा मैं तुम्हें आगे जो करवा रहा हूँ वो है थ्योरी पोर्शन, क्योंकि आगे जो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में जा रहे हैं वहाँ पे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए माइंड में। So first I am going to explain to you 3 systems. One is the equinoctial system, then the horizon system, फिर इसके बाद मैं आपको PZX ट्रायंगल बताऊंगा डिटेल में कि कैसे उसकी डायग्राम बनती है, वो एक्चुअली है क्या। ओके इन पे सवाल नहीं आते हैं, nobody is going to ask you now what is the horizon system, what is the equinoctial system, वो सेकेंड मिड लेवल के क्वेश्चंस हैं। अब क्या आएगा बेटा, अब क्वेश्चंस ऐसे आएंगे न्यूमेरिकल जिनमें ये कॉन्सेप्ट यूज होंगे। सो इफ़ यू डोंट नो दीज थिंग्स तो आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द पर्पस। सो पहले हम ये डेफिनेशन देखेंगे, एंड वंस वी आर क्लियर अबाउट दीज डेफिनेशंस, लेट अस सी इफ वी गेट टाइम आफ्टर दैट, देन वी विल मूव ऑन टू फ्यू अदर कॉन्सेप्ट्स लाइक स्टेलर मैग्नीट्यूड एंड ट्वाइलाइट। सो रेडी हो बेटा, चलें?
Yes, Yes, sir. Okay, great. Let me set it up, beta. Give me a minute. So beta, first I'm going into the equinoctial system. So let's see that. In this presentation, first of all, we are going to understand the celestial sphere. And once the celestial sphere is understood, we are going to go into the equinoctial system of reference on the celestial sphere. So let's try to understand the celestial sphere using a diagram. We first make the diagram of the Earth. You can see the Earth coming up on the slide. Now, we know that the Earth rotates about its axis, completing one rotation in 24 hours or in one day. This axis around which the Earth rotates, the points from where these axes pass through the surface of the Earth, or the point where the axes cross the surface of the Earth, are known as the poles. So we can see the North Pole coming up in the diagram, and we can also see the South Pole coming in the diagram. So we have shown the Earth slightly tilted in our diagram to make it easy to understand and clear. Now exactly midway between the North Pole and the South Pole, we have the equator. So you can now see the equator coming up on the screen. We have the equator on the Earth. Now let's introduce the celestial sphere. You can now see the red color circle, which is basically a sphere, which we see on the screen, is the celestial sphere. Now to define any sphere, we need to have two references or two pieces of information. What is the center of the sphere and what is the radius of the sphere? Now, as far as the celestial sphere is concerned, its center is the same as the center of the Earth. So Earth as well as celestial sphere are both concentric spheres. And the radius of the celestial sphere is infinite. It is an imaginary sphere. It does not exist in reality. We have imagined it for our understanding, and the radius is assumed to be infinite. Now, exactly like we have the reference of poles and the equator on the Earth's surface, we have some references on the celestial sphere also. Using the reference of equator and the poles, we can pinpoint or identify any position on the Earth's surface. The positions on the Earth's surface are identified through their latitude and longitude. Latitudes are measured with respect to the equator, and the longitudes are measured with respect to the meridians passing from both the poles. Now, exactly in the same way, to identify any location or any position on the celestial sphere, we need to have some references there also. So let us see the references of the celestial sphere. First of all, let's make the axis of the Earth. You can now see the axis of the Earth passing from the North Pole and the South Pole, and these axes are now extended up to the celestial sphere. Now the point where the axis goes and touches the celestial sphere towards the North Pole is known as the North Celestial Pole. In short, known as NCP, November Charlie Papa, North Celestial Pole. And the direction where this axis
produced or extended towards the south pole goes and meets the celestial sphere is known as the south celestial pole, SCP. So we have the north and south celestial poles on the celestial sphere. Now let us show another reference, that is the equinoctial, or also known as the celestial equator. You can now see this red color great circle on the celestial sphere. This is the equinoctial. Now the equinoctial is exactly midway between the north celestial pole and the south celestial pole, in exact same manner as the equator is situated exactly midway between the north and south poles on the Earth's surface. And the equator is used as a reference to identify the latitude of a body. The latitude basically tells us how much north or how much south of the equator a particular position is. Exactly in the same way, the equinoctial is used as a reference on the celestial sphere, and we define the declination of the body with reference to the equinoctial, and the declination tells us how much north or how much south of the equinoctial a particular body or position is. So the function which is done by latitude on the Earth's surface is done by the declination on the celestial sphere. Latitude reference to equator and the declination reference to the equinoctial. The second reference which we use on the Earth's surface are the meridians. We use the Greenwich meridian as a reference to measure the longitude of a position. Exactly in the same way, we use the celestial meridians on the celestial sphere. Let us now show a celestial meridian. You can see a green color track, green color great circle, semi-great circle between the north celestial pole and the south celestial pole, showing us a celestial meridian. Exactly like the meridians on Earth are semi-great circle between north and south poles, exactly in the same way, the celestial meridians are semi-great circles between the north celestial pole and the south celestial pole. On Earth, we use the meridian of Greenwich for our reference of longitude, and on the celestial sphere, we use the celestial meridian of Greenwich to identify a position on the celestial sphere. Now there is one difference in this reference. On the Earth's surface from the Greenwich meridian, we measure the longitude 180 degrees east or west of Greenwich meridian. But on the celestial sphere, using the celestial meridian of Greenwich, we measure it only in the westerly direction and from 0 to 360 degrees. We do not measure the reference on the celestial sphere in the easterly direction. We measure this in the westerly direction from 0 to 360. And this reference is known as the GHA, Greenwich hour angle of a body. And just like latitude and longitude identifies a position on the Earth's surface, exactly in the same way, the declination and GHA of a body identifies its position on the celestial sphere. Now there is one more reference which is used on the celestial sphere, and that is with respect to the celestial meridian of first point of Aries. Now what is this first point of Aries? We have the equinoctial on the celestial sphere. We have seen the equinoctial. Now the path of the sun on the celestial sphere is represented as ecliptic. And this path of the sun, which is the ecliptic, cuts the equinoctial at 2 points. One time when the sun is going northwards from south to north, and the second time when the sun is going southwards from north to south.
Now, when the path of the sun intersects the equinoctial going from south to north or in the northerly direction, the point of intersection of the path of the sun, that is the ecliptic, and the equinoctial is known as first point of Aries. So the celestial meridian of first point of Aries is also taken as a reference. If we measure the angle with respect to the first point of Aries, it is known as SHA, sidereal R angle. So just like GHA is measured from celestial meridian of Greenwich, SHA is measured from celestial meridian of Aries. Let me give you the definition of GHA. GHA is the angle at the pole contained between celestial meridian of Greenwich and the celestial meridian of the body measured westwards. If you replace Greenwich with Aries, this becomes the definition for SHA. SHA is the angle at the pole contained between celestial meridian of Aries and the celestial meridian passing through the body measured westwards. Both GHA and first point and SHA, sidereal R angle, are measured in the westerly direction from 000 degrees to 360 degrees. Beta, any doubts coming up to here? No, sir. Very good. सर ये SHA का एक बार वापस समझा दो सर. Okay, beta, SHA is basically measured with reference to celestial meridian of Aries. Okay, we measure the angle between celestial meridian of Aries and the celestial meridian of a body in the westerly direction. That is what is SHA. Clear, beta? Okay sir, clear. Okay. Excuse me sir. बोलो बेटा. ये एक सेकंड क्वेश्चन में आपने आंसर्स में लिखा हुआ है GHA Aries प्लस SHA स्टार प्लस लॉन्ग ईस्ट इज इक्वल टू 360. तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा सकता है कैसे? बेटा मैं तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा. ये डेफिनेशन तुम वहां पे लिखना चाहते हो? नहीं या तुम ये पूछ रहे हो कि वो 360 के इक्वल कैसे आया? हाँ, मतलब इसमें हम अभी तो डायग्राम खुला है तो इधर अच्छे से समझा सकते हैं अभी. उसको समझने के लिए तो बेटा डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो जो क्वेश्चन है उसमें मेरिडियन पैसेज टाइम पूछ रहे हैं वो, राइट? मेरिडियन पैसेज टाइम जब आप निकालते हो एट द टाइम ऑफ मरपास, बॉडी का LHA जो है वो 0 होता है, LHA. सो वी हैव जस्ट केप्ट LHA इज इक्वल टू 0 और 360. ओके बेटा, अगर डायग्राम बना के भी समझाना है, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी गो टू द रैशनल हॉराइजन डायग्राम, फिर मैं उस पर आपको सारी चीजें समझा दूंगा जो भी आप बोलोगे. ओके, जस्ट होल्ड ऑन. ओके, लेट्स मूव अहेड. This now completes our explanation of the celestial sphere and the equinoctial system of reference. Let us now go into our second system of reference on the celestial sphere, which is known as the horizon system. Now for the horizon system, we first show the position of the observer in our diagram. Now we have shown the observer right on the top position here at the Earth's surface. So you can see the O point coming up on the Earth's surface. This is the observer's position. Now we draw a line from the center of the Earth passing from the observer's position, and we extend this line to the celestial sphere. You can see this dotted line coming up from the center of the Earth, going up to the observer's position and extended upwards. The point where this line goes and meets the celestial sphere is known as the zenith of the observer. And if you extend this line in the exactly opposite direction, reciprocal direction,
The point where it goes and meets the celestial sphere is known as the nadir of the observer. So this is one of our reference which we use in the horizon system, the zenith and the nadir. The zenith is basically the point which is exactly vertically overhead of the observer, which you can see right on top of the sky. That point is the zenith, and the nadir is the point which is exactly reciprocally opposite to it or totally downwards on the other side of the earth. That point is the nadir point. So zenith is 90 now, degrees. exactly midway between the zenith and the nadir, we have a great circle here, which is our rational horizon. Go ahead with your doubt, beta. Sir, zenith is 90 degrees over here. Observer to zenith. Beta, observer to zenith is basically infinite distance. The zenith is the point which is vertically overhead, and from the zenith to the rational horizon is 90 degrees. Okay, sir. Thank you. Okay. Sir, zenith is a line passing through the observer. No, it is a point, beta. It is not the line. It is a point which is directly overhead. So overhead of observer. Exactly, beta. Okay, sir. Okay, sir. So it is a point overhead an observer, and nadir is just opposite to that. Yes, nadir is on the other side of the earth, which observer. is exactly reciprocally opposite to the zenith. Okay, sir. Okay. And sir, this rational horizon. Sir, this rational horizon is passing through the center of the earth or through the observer's height of eye? No, beta. Rational horizon is basically a great circle whose plane is passing from the center of the earth. Okay, copied. Understood. Okay. You can see the rational horizon now coming up in the diagram. Rational horizon is exactly midway between the zenith and nadir. We can also define rational horizon as rational horizon is a great circle on the celestial sphere, every point on which is 90 degrees away from the zenith as well as the nadir of the observer. Now let us introduce a celestial body in our diagram. Let's assume that we have a star at this particular location. The red color star is there in the diagram now. Now we draw a semi-great circle passing from our celestial body star, which is named as X, and also passing from the zenith and the nadir of the observer. You can see this red color semi-great circle passing from the zenith, passing from the celestial body X, and passing from the nadir. Now this semi-great circle passing from zenith and the nadir, these are known as vertical circles. There can be infinite number of vertical circles as zenith and nadir are diametrically opposite. We are interested in the vertical circle which is passing from the celestial body. Now, once we understand the vertical circle, we can also define the directions on our rational horizon. Now, if we draw a vertical circle, which will be passing from the zenith and passing from the north celestial pole. The north celestial pole is at this particular location. So a vertical circle passing from the zenith and the north celestial pole and going up to the nadir. Wherever this vertical circle touches the horizon, that is the north point on our horizon. It is indicated as 0, 0, 0 direction or the north point on our horizon. I will repeat once again. The vertical circle passing from the north celestial pole, wherever this vertical circle touches the rational horizon, that is the north point of our rational horizon. Once the north point is known to us, we can have other direction references also. If we go clockwise, once we go up to 90 degrees, we reach up to the east direction.
If we go further clockwise, once we reach 180 degrees, exactly in opposite direction to north, we have the south direction. And when we go further, once we go 270 degrees in the clockwise direction from the north point, we reach up to the west point or the west direction. And going back 360 degrees, we reach back to the north point. So these are defined as north, east, south, and west points on our horizon. And our compass gives us the direction basis these references. Now, having understood the vertical circle, we can very easily understand what is the true altitude of a body. We see this red color vertical circle passing from the celestial body X. Now this vertical circle crosses the horizon at this particular point, the rational horizon, at this particular point, which is named as H. Now this arc between H and X is known as the true altitude of the body. It can be defined easily now from the diagram. The arc of the vertical circle contained between the rational horizon and the center of the body is known as the true altitude of the body. I will repeat once again. The arc of the vertical circle contained between the rational horizon and the center of the body is known as the true altitude of the body. So it is represented by this maroon color arc between H and X. Now we are aware that all the points on the rational horizon are 90 degrees away from the zenith. So from zenith to point H is 90 degrees. H to X is true altitude. So obviously Z to X, the arc which is represented in green color now, Z to X will be 90 minus true altitude, and this is known as the true zenith distance. In short, TZD. So we can also define the TZD now using this diagram very easily. The arc of the vertical circle contained between the zenith and the center of the celestial body is known as the true zenith distance, and it is equal to 90 minus true altitude. Beta, any doubts coming in here? Have a good look. Let me know the doubts. No, sir. Sir, the prime vertical over here can be shown as this east-west, how you call, vertical circle passing through the east-west points, correct? That's right, beta. You can visualize it. A vertical circle which is passing from the east and west point, that is known as the prime vertical circle. It will obviously pass from the zenith and nadir also. Yes, sir. Okay. Okay, beta. Great. Let's move ahead. Now we have understood the equinoctial system of reference and the horizon system of reference on the celestial sphere. Now using these two systems, it is very easy to understand the concept of the PZX triangle. PZX triangle is a very, very important concept in navigation and is used in solving many of the questions in celestial navigation. So let's try to identify the PZX triangle in our diagram. We have seen that this particular point, the NCP point, is the north celestial pole. This is represented by point P, Papa. We know that this point is the zenith of the observer, exactly overhead. This is represented by alphabet Z, Zulu. And we know that the celestial body is represented by alphabet X. So covered by these 3 points, P, Z, and X, this particular triangle which you see, you can follow the laser pointer. This particular triangle P to Z to X is known as the PZX triangle in celestial navigation. And it helps us to solve many celestial navigation problems using spherical trigonometry, using the concept of cosine formula and Napier's rule.
We have already seen the side ZX of this triangle. The side ZX is the true zenith distance, which is 90 minus true altitude, as H2X was the true altitude of the body. Let's try to identify the other sides of this PZX triangle also. Now, if you pay your attention to the Earth diagram, right on top here we have the observer, and here we have the equator. Now, this arc of the meridian contained between the equator and the observer is the latitude of the observer. Now, this arc, which is the latitude, will be exactly equal to the arc Q to Z on the celestial sphere. When we measure the angles or arcs on spheres of different radii or radius, they remain the same. So Q represents the equator on the celestial sphere, Z represents the observer's position on the celestial sphere, and the arc Q to Z is equal to the latitude of the observer. Now we are aware that from the pole to the equinoctial, that is Q point, pole to Q is total 90 degrees. If Q to Z is the latitude, then P to Z will be 90 minus latitude, which is also known as co-lat. So I'm repeating once again. Q to Z is the latitude of the observer. Q to P is total 90 degrees. Pole to the equinoctial is 90 degrees. So P to Z, which is side PZ of our PZX triangle, is the co-lat or 90 minus latitude. Now moving further, coming to the third side of our triangle, that is PX. Now, if you pay your attention to the celestial meridian passing through the body, the celestial meridian passing through the body is going from point P to our celestial body X. Then it is crossing the equinoctial at this particular point, which is identified as delta, and then moving to the south celestial pole. Now, if we measure the arc from delta to X-ray, it is the arc of the celestial meridian contained between the equinoctial and the center of the body. This is what we call as the declination. So delta to X-ray is the declination of the body. We also know from delta to papa, that is pole to any point on the equinoctial, is 90 degrees. So papa to X-ray has to be 90 minus declination, which is the polar distance. This is known as the polar distance, the distance between the celestial body and the pole. So the third side of our triangle is known as the polar distance, equal to 90 minus declination in this particular case. So I will repeat once again. Delta to X-ray is the arc of the celestial meridian contained between the equinoctial and the center of the celestial body. This is the declination of the body. And we know pole to delta, P to D, pole to the equinoctial is 90 degrees. So P to X has to be 90 minus delta X-ray or 90 minus declination. So side PX of the triangle equal to 90 minus declination is the polar distance. So we now have all the three sides of our PZX triangle. Side ZX is the true zenith distance, or the distance between the zenith and the celestial body, equal to 90 minus true altitude. Side P to Z is 90 minus latitude, or the colat, and side P to X is the polar distance, or 90 minus declination. Now, any doubts coming up to here, beta? Sir, P to No, sir. Q is latitude, sir. P to Q, beta? Yes, sir. No. P to Q is 90 degrees, beta. P is the pole, Q is the equinoctial. So P to Q is total 90 degrees. Latitude is Z to Q, Zulu Z. cubic. Okay, sir.
Okay, great. So let's move ahead. आपने एक बहुत important concept जो है वो समझ लिया है. Now this type of explanation is unfortunately not there in any of the books. So this diagram also you will not see anywhere. So if you have understood this concept, then a very important concept of navigation is now clear in your mind. Let's proceed ahead. Let's go into the detail of PZX triangle now. Now, having understood, कुछ अलग बनेगा साउथ पोल से वो लेके चले तो say again, beta. Sir, if we taking the SCP south pole. Okay, we can take the body at any point of our choice. I have taken it here so that it is very easy to understand. But once we make the rational horizon diagram, you can pick up any pole, any body, we will be able to make it. ओके सर, जैसे क्वेश्चंस में चल ठीक है सब क्वेश्चंस आएंगे तब पूछता हूँ कि क्वेश्चन में कई बार साउथ होता है तो उसमें कंफ्यूज जाते हैं. नो प्रॉब्लम बेटा, पहले रैशनल हॉराइजन डायग्राम बना लें, फिर जिधर मर्जी ले जाना, देन वी कैन गो एनीवेयर. ओके. The concept of PZX triangle, we have first understood the equinoctial system, then the horizon system, and we are now able to see the PZX triangle on the celestial sphere. So let's now try to convert this PZX triangle to the rational horizon plane. Now this diagram which you see on the screen right now is exactly the same diagram picked up from the last slide. All the things which are mentioned here we have already discussed. You see this PZX triangle here. It is the same PZX triangle. PZ side is the colat 90 minus latitude. ZX side is the true zenith distance, which is 90 minus true altitude. The side HX represent the altitude of the body. And the third side PX is the polar distance, which is equal to 90 minus declination. Now it will be very difficult for us to make this kind of diagram. This is actually a 3D diagram represented on a plane surface. And for solving the questions which are based on the PZX triangle, if we need to make a diagram like this, it will be very, very difficult, hard, as well as time taking. Especially in the examination conditions, if you have to make this kind of diagram in every question, it will take a lot of effort as well as time. So to show all these things in a very simplified version, we can simplify this particular diagram by simply looking at it from a different angle or from a different perspective. Now, how do we look at it? Let us try to understand it now. First of all, you see, we are only interested in that part of the celestial sphere which is above the rational horizon. That means this particular part, which contains the PZX triangle also. This is the part which we are interested in. We are not interested in the bottom part of the celestial sphere that is below the rational horizon, because that in any case will not be visible to the observer. So we are not interested in this particular part. Now, how to have a perspective or angle so that this bottom part can be eliminated altogether and we are able to concentrate our attention to the top part. So for this, we visualize as if we are looking at the celestial sphere from top of the zenith. Right now we are looking at the celestial sphere somewhere from this west point. Somewhere from this angle we are looking at it, but assume for the moment that you are able to go up to the zenith. Let's say you have a rocket accessible to you, you sit in the rocket
it takes off and it goes vertically upwards. Now, if that rocket goes vertically upwards, eventually at one point of time, it is going to reach the zenith of the observer. Now, we don't stop at zenith. We take the rocket still further upwards. Now, let's assume that the rocket has reached up to here. So once we have reached up to here, now we look down below towards the celestial sphere. So we are outside the celestial sphere now, and we are on top of the zenith. And you can say we are having a bird's eye view on the celestial sphere from top of the zenith. Like you see, many of the shots are taken by drones nowadays. So the drone flies high up in the sky and it takes a bottom picture, a aerial view. So that is what we are looking at it. So right now our eye, or we are situated at where the laser pointer is, and we are looking down at the celestial sphere. Now, how does the celestial sphere appear? We will try to put it in a diagram on the right hand side of the screen. So in the blank portion now you will see how does the celestial sphere look from top of the zenith. Now, first of all, the celestial sphere looking from top is going to look like a circle again. So it will appear like a circle as you see on the right hand side of the screen. Now, when you are looking from top, you see this was the north point. The circle which we have made on the right hand side is basically the rational horizon of the observer. When you are looking from the top, the circumference of the celestial sphere will be the rational horizon of the observer. Anything which is below the rational horizon will not be visible to us. It will go on the far side of the celestial sphere. We will only be able to see what is on top of the rational horizon. So when we look at the celestial sphere, the circumference of the celestial sphere which we are going to look at is the rational horizon. So the circle which we have drawn on the right side of the screen represents the rational horizon of the observer. And that is why the name given to it as rational horizon diagram, because it is made on the plane of the rational horizon of the observer. Now you see we have this north point on the rational horizon. Now, as per our sign convention, we show this north point on top of our rational horizon diagram. It matches up with our charts also. We have the north direction represented upwards. So here also in the rational horizon diagram, we represent the north direction up. Now, exactly opposite to this north direction on the other side, you will have the south point. And if you go 90 degrees towards the right side of north, you will have the east point. And if you go 90 degrees towards left side of the north point, you will have the west point. So let us mark off these points in our rational horizon diagram. We have the north point here. If you go to the right side by 90 degrees, you will reach to the east point. So you see represented by E in our diagram. And if you go opposite to the north point, exactly opposite to where the north point is, exactly opposite to it, you will have the south point represented by S in our rational horizon diagram. And if you go 90 degrees to the left of north, you will have the west point represented by W here. So all these 4 points, N, E, S, W, represented on the plane of the rational horizon. Now you see, going from north up to the north celestial pole, from the north celestial pole going up to the zenith,
up to Q point and up to S point. This is going to look like a straight line joining the N and S points. So if you have a look at this from top, it is going to look as a straight line joining the N and S points. So let's see it here. It is going to appear as a straight line joining the N and S points. Similarly, if you draw a vertical circle which will pass from the zenith and pass from the west point, this vertical circle passing from the zenith and the west point, and also a vertical circle passing from the zenith and the east point. So going from east up to the zenith and coming back to the west point will also look like a straight line when you look at it from top. So you see this is the W to E vertical circle line which we visualized in the celestial sphere, and exactly in the center you will have this Z point. When you look from top, the circumference will be the rational horizon, and this Z point, that is the zenith of the observer, will be exactly in the center. So let us show this Z point exactly in the center here. You have the Z point here at the center. Now from Z, if you move towards the south point, from Z moving toward the south point, once you cover an arc equal to the latitude, you reach up to point Q. So let's mark off this Q point in our rational horizon diagram. So from the zenith, when you move towards the S point and you move a distance equal to the latitude, you reach up to the Q point here. So from the zenith towards the south point, we moved an arc or distance equal to the latitude, we reached at Q point. So this Q point represents the Q point here in this diagram. Now if you look carefully, from the Q point, if you join up the W point, W to Q, and moving further Q to E, this particular arc, E point to Q point to W point, represents the equinoctial. So we can also show the equinoctial in our rational horizon diagram now. You have the W point here, you have the Q point here, and you have the E point here. So joining W to Q to E will give us the equinoctial. So let us do that. So you see W joined with Q joined with E gives us the equinoctial. So this WQE represents the equinoctial in our rational horizon diagram. This WQE you can see here in the celestial sphere diagram. This is point W going up to point Q, going up to point E. Only this part of the rational horizon will be visible to you. If you go beyond W on this side, or you go beyond E on this side, this is going to fall in the far side of the celestial sphere, which will not be visible to us. So this will not be visible to us. So that's why you only see half of the equinoctial, which is visible to you as WQE in our rational horizon diagram. Now let's proceed ahead. Let's come back to the Z point. From the Z point, if you go towards N point, towards the north point is here. So from Z, if you move
towards the north point equal to a distance which is your colat or 90 minus latitude, you will reach at the north celestial pole. So let us show this in our diagram now. We start off from the Z point, we move towards the north point, and we move a distance equal to 90 minus latitude or our colat. The point where we arrive is the north celestial pole. It is represented by P. So let's mark this as P here. You can see the north celestial pole shown in our rational horizon diagram. Let's mark off the arc P to Z also. So this is marked in yellow, exactly same as was marked in the celestial sphere diagram. So you see P to Z was marked as yellow, and it has been marked as yellow in the rational horizon diagram as well. This is equal to 90 minus latitude or equal to the colat. Now let's take our attention to